Okay, so today we'll see methods of HV generation. Methods of HV generation. Okay, so today I will be explaining about what are the different methods to produce high voltage DC, high voltage AC, and impulse waveforms. High voltage DC, high voltage AC, and impulse waveforms. Okay, so first one is how to produce high voltage DC. How to produce high voltage DC. How to produce high voltage DC. So HVDC generation, what are the methods to produce HVDC? What are the methods to produce HVDC? First one is rectifier, by using rectifiers. Okay, how to produce HVDC? First method is rectifier, by using rectifier. Okay, high voltage rectifiers. So there are varieties of high voltage rectifier. There are varieties of high voltage rectifier like everybody knows half wave rectifier, full wave rectifier, and voltage doubler type rectifier. Okay, so this is the first method. This is the first method. This is the first method, rectifier, by using different varieties of high voltage rectifier. Second method is Venn diagram generator. Venn diagram generator. Second method is Venn diagram generator. It is mainly used for particle accelerator. The area of application is nuclear physics. Please note down. It is mainly used for the particle acceleration. Okay, it is mainly used for particle accelerator. I also write here. It is mainly used for particle accelerator. Okay, and the area of application is nuclear physics. Okay, third one is Cook-Croft-Walton type DC generator set. Third one is Cook-Croft-Walton type DC generator set. Okay, so these methods, the method of high voltage generation, this rectifier, Venn diagram generator, Cook-Croft-Walton type, these are some of the very important topics in high voltage engineering. So this is the thing which I was wondering to cover this portion earlier, right? So this Cook-Croft-Walton type, because these are the things which are going to come in the exam as well as for interview point of view or Viva point of view. Basically, we don't have the practical for this, but there are many engineering colleges like GEC Jabalpur. So they are having a very good high voltage engineering lab. Okay, and also in the BHL also they are working on very high voltage like 11 kV, like, right? So they are working on high voltage. So industrial point of view, as per as the Viva point of view, these methods of generation of high voltage, they are very important. Okay, and nobody is going to ask about half wave and full wave rectifier, although it's a part of high voltage generation, but they'll ask about voltage doubler type rectifier, Venn diagram generator, Cook-Croft-Walton type DC generator set. Okay, these are the things which are important, right? But we will cover all the portions. So have you written all these three names? देखा है भाई आप लोगों ने?
Yes, sir. ओके, और जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो अपन आगे बढ़े फिर। Okay, so this first one is rectifier. This rectifier you have already studied in power electronics and analog electronics. Okay. Similarly, Venn diagram is also available, and the third, this Cook-Proth-Walton type DC generator set, that is also available for high voltage DC generation. Okay, these are the different popular methods to reduce high voltage. So now let us move on. What are the different methods to produce high voltage AC? We will discuss these methods, all the methods one by one. But let's figure out what are the sub points of this all the methods for high voltage AC, high voltage DC, impulse waveform. Okay. Now let us move on. What are the different methods to produce high voltage AC? Okay. So second one is HV AC generation. So anybody wanna try? कोई ट्राई करना चाहेगा कि भाई क्या है HV AC के जनरेशन के मेथड्स? Please. Okay. Okay. First method is by using high voltage transformers. First method is by using high voltage transformers. Okay. Have you heard about high voltage transformers? सुना है भाई, ट्रांसफॉर्मर का नाम तो सुना है, बट उसके अंदर हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का नाम सुना है? बोलो फटाफट, आगे बढ़ूं मैं। Yes, sir. Okay. And the second method is cascade transformers. Principally same here. Second method is cascade transformer. Cascade transformer principally same here. Here, small units of transformers are connected in series type. Okay, cascading means basically cascading is a type of series connection. This everybody knows. So here, small units of transformers are connected in series type, and finally you will be getting high voltage output. Cool. Okay. Finally, you will getting high voltage output, right? So if the transformers are connected in series, voltage will be added up. Okay, if the transformers are connected in series, this voltage will be added up. Okay, so this is the principle of cascade transformer, right? This all the things you have already seen in power electronics, analog electronics, machines, right? Power system, and what was that subject? Have you studied CAPS, computer aided power system? CAPS हो गया क्या भाई? चल रहा है अभी? बोलिए। Optional है सर, HVA हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग और कैप्चर। अच्छा, okay. तो कैस्केडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो इन दिस स्मॉल छोटे मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर, small units of transformers that are having a low value that are connected in series fashion, right? So के कारण क्या होगा, the transformers are connected in series, voltage will be added up. And third method is resonant circuit. Third method is resonant circuit. Resonant circuit. Third method is resonant circuits. Okay, it obeys the principle of resonance. It obeys the principle of resonance. So there are two types of circuits available. One is series circuit, and another one is parallel circuits. I will be discussing it individually. I will be discussing this resonant circuit individually for series as well as for parallel. Okay, so third method is resonant circuit. Fourth one is Tesla coil. Tesla coil is also very important.
Tesla coil is also very important. Tesla coil method. If you want to uh, if you want to add some kind of musical effect, some kind of special some special type of light music, so we can use Tesla coil. It is one of the method to produce high voltage AC with very high frequency or low frequency. Tesla coil works on very high frequency, low frequency. क्वेश्चन, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लो पे काम करता है टेस्ला को? हाई वोल्टेज एसी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? यस, क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है अभी? यस सर, नो सर तो बोलो, काफी लोग हैं यार क्लास में। हाँ, सागर, श्रेया, विजेता, महक, खुशी, हर्षित, भारती। भारती, टेस्ला कॉइल की फ्रीक्वेंसी बताओ तुम, हाई होगी कि लो होगी? हर्षित आप बताओ। सर होनी चाहिए। हाँ सर आई थिंक हाई होनी चाहिए। कंफर्म नहीं है मतलब अपन को, है ना? चल, so Tesla coil, it is one of the method to produce high voltage AC with a very high frequency. Okay, so let's conclude here. How to produce high voltage AC? Four methods are available that are listed here. First one is using high voltage resonant transformers. Sorry, by using high voltage transformer. Second one is cascading of the transformer. Third one was resonant circuit. We'll use resonant circuit that are available for two fashions. That is one is series, another one is parallel. And fourth one was Tesla coil, that is working on very high frequency Tesla coil, that for producing if you want to add some kind of musical effects or uh, have you seen any magic show in which that magicians are using like that they are blowing the bulbs? Have you seen without any supply and without any connection? देखा है तुम लोगों ने? मैजिशियंस यूज करते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली? ये सर, पर समझ नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं आप। मैं पूछ रहा था कि जो मैजिशियंस होते हैं वो अपन को एक बल्ब दे देंगे हाथ में, और वो बिना कनेक्शन के, बिना सर्किट के वो अपने आप ग्लो करने लगता है। यस सर, देखा है। देखा है? तो वो क्या प्रिंसिपल Yes. है? वो जादू तो नहीं है, वो क्या प्रिंसिपल है? चलो ठीक है ना, देखना उसको आप, यूट्यूब पे पता चलेगा। सो तो ये हो गया अपना हाई वोल्टेज एसी जनरेशन। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन इम्पल्स वेवफॉर्म। इम्पल्स will be moving for impulse waveform. Dark color impulse waveform. Okay, or impulse how to produce impulse voltage and impulse current. Let's see how to produce impulse voltage and impulse current, the generation of impulse voltage and impulse current. So what are the different methods available? First method is impulse voltage generator. Okay, impulse voltage generator. Impulse voltage generator. In this, there are two segments. First one is single stage impulse voltage generator. Second segment is multi-stage impulse generator. Right? We will see all the things. All the things what I am explaining we'll see in brief. This high voltage DC, AC, impulse, को मतलब जितनी भी मैंने ये चीजें लिखवाई हैं सबको एक एक करके अपन को, मतलब ये सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, राइट? तो एक एक करके देखना है अपन को।
सारी क्लासेस आगे चल के सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी. Although recording will be available on this MS Team, but there is limit for MS Team in 20 days. जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग वो वैनिश हो जाती है 20 डेज. All the recordings I am uploading on YouTube also, so you can visit. You can see, you can visit YouTube channel also, so you will get all the recordings there, and the link I will be providing on whole platform. Okay. So impulse voltage, impulse waveform for current and voltage. The first method is impulse voltage generator, and there are two segments. First one is single stage impulse voltage generator. Single stage impulse voltage generator, and the second method is multi-stage voltage generator. Multi-stage voltage generator. Okay, this multi-stage generator is most popular. One of the scientists that is named as Marx, M-A-R-S-K, Marx. So he had designed the multi-stage impulse generator that is also known as Marx generator. So S will not come here. Okay, Marx. I don't know if I'm spelling it. Marx. So he had designed the multi-stage impulse generator, and that is also known as Marx generator. M-A-R-K-S, Marx generator. If you will see the syllabus of this high voltage engineering, this Marx impulse generator is very important. This Marx impulse generator is very important. Okay. So Marx impulse generator हो गया. Second segment is impulse current. How to produce impulse current? So how to produce impulse current? By using impulse current generator. Impulse current generator. So if we will have sufficient time, we will see the virtual lab. So basically we don't have high voltage engineering lab here, and in this subject we don't have any lab because this is an elective subject. मेरी आवाज आ रही है? तुम लोगों को कुछ बोल नहीं रहा है. यस सर, नो सर भी कोई नहीं बोल रहा. आ रही है आवाज सर. आ रही है. जो मैं समझा रहा हूँ समझ में भी आ रहा है ना. क्लास में भाई मजा आना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है. तो ऐसे खाली नहीं बैठना है अपन. तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली अपने पास हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लैब तो है नहीं, और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग लैब्स बेसिकली. तो we will see some of the virtual labs. We will see some of the virtual labs which are designed by IITs, in which we will see the production of high voltage impulse voltage and current. Okay, how they are producing high voltage impulse current and voltage. Okay, so can I turn this page? Have you written all the things? Change कर दें? Yes, sir. Yes, sir. Now let's move on to some of the importance and application of high voltage generation. Importance and application of high voltage. Importance and application of high voltage generation. High voltage generation. So before entering this topic, we need to see the importance of HVDC, HVAC, and impulse voltage. Okay, before entering this topic,
we need to see the we need to see the advantages of or importance of HVAC, HVDC, and impulse voltage. So, what is the importance of HVDC? What is the importance of HVDC? Importance of HVDC. So, first look about the why HVDC is needed. What are the applications of HVDC? We'll see what are the applications of HVDC. First one is electrostatic precipitator. Okay, I have already discussed this before. This HVDC that is used for electrostatic detector. Okay, so it is mainly used for pollution control. Moreover, its working is based on high voltage DC. That is mainly used for pollution control. अब बताया था ना मैंने pollution control कहाँ पर, याद है किसी को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बताया था ना इंडस्ट्रीज वगैरह में जो चिमनीज वगैरह अपन लोग लगाते हैं वहाँ पे उसमें फिल्टर का काम करता है। ऐसा कुछ बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, ध्यान आ रहा हो तो फिर अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर अभी याद रखो, ठीक है। It is mainly used for the pollution control. Okay, but its working is based on high voltage DC. Second one is high voltage DC transmission. Okay, well, we all know that it is under research and development, it is under R&D, and we require high voltage DC for transmission. Right, we don't require high voltage AC for transmission, we require high voltage DC for transmission. This thing everybody knows. There is a lot of possibilities of losses in high voltage AC transmission. Like, Acha, now you tell me why we are doing the transmission in DC only, why not in AC for long distance transmission lines? Why it is preferred to choose DC not AC? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा ना। ये मेरे को बताना है कि कॉपर लॉसेस या कंडक्टर का साइज। हेलो अरे यार, कौन कौन है मेरी क्लास में? हाथ उठाओ जल्दी फटाफट, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 सभी है, लेकिन बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? फिर हाई वोल्टेज डीसी का ट्रांसमिशन क्यों करते हैं अपन, एसी का क्यों नहीं करते फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है? वो कोरोना इफेक्ट और वो स्किन इफेक्ट से बचने के लिए। हाँ, एक तो स्किन इफेक्ट तो चलो आपने सही बोला है ना, तो फिर वो स्किन इफेक्ट क्यों आता है? वैसे तो साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, राइट? ऐसा कुछ है क्या शिवम? नहीं सर, स्किन इफेक्ट में सर वो अल्टरनेटिंग करंट रहता है ना सर। हाँ तो हाई अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वो मतलब जो करंट है वो केवल आउटर मतलब कंडक्टर के आउटर लेयर से केवल फ्लो होना लगता है, तो वो स्किन इफेक्ट होता है। पर डीसी में वैसी कोई बात ही नहीं है। डीसी में ये बात ही नहीं होती। पर बाकी जैसे अगर चलो एक मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर स्किन इफेक्ट को अपन ओवरकम करने के लिए क्या यूज करते हैं? उसको भी कम तो करना पड़ेगा ना। सर वो तो याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं आ रहा? क्या करते हैं तो लोग बंडल्ड कंडक्टर्स का यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे मतलब आप जैसे एक मोटा वायर लिया अपन ने, तो मोटे वायर में क्या रहेगा कि वो सरफेस के ऊपर ही सिर्फ करंट फ्लो करेगा, बाकी जो उसका अंदर वाला जो पोर्शन है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, टोटली वेस्ट हो जाता है, वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करता।
राइट। तो क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पतले वायर लेके एक बड़ा साइज का वायर बना देंगे, ऐसा बहुत सारे कंडक्टर्स को यूज करके एक छोटा सा वायर उसी डायमेंशन का अपन फॉर्म कर लेंगे, तो इसके इफेक्ट ओवरकम हो जाएगा बहुत हद तक। चलो हाथ नीचे कर लो आप। ओके, तो for high voltage DC transmission, we require high voltage DC. Okay, for okay, you got this point. For this transmission, we require high voltage DC, right? Then electrostatic paint, as well as in cement industries, this high voltage high voltage DC is used in electrostatic paint and in cement industries also. Okay, likewise, there are so many applications which are under high voltage DC. Okay, so the need for generation of high voltage is more essential. Okay, so there are many applications. Moving on to the next one, importance of high voltage DC. I think you have heard about high voltage AC. Mainly this is used for power system. Mainly this is used for power system like bulk power transmission. Let's move on to the importance of HVAC. Mainly this is used for power system like it is used for bulk power transmission. Bulk power transmission. Okay. Moreover, it is applicable for X-rays also. Then it is also used for military applications, high voltage AC. And these are the applications mainly depend on generation of high voltage AC. Okay, so generation of high voltage AC is also most important, right? Generation of high voltage AC is also more important. DC की अपनी importance है, AC की अपनी अलग importance है. Now moving on to the next thing. Importance of impulse voltage. Importance of impulse voltage. So impulse voltage, it is mainly used for testing of high voltage cable. Okay, this is mainly used for testing of high voltage cable. It's mainly used for testing of high voltage cable, testing of switch gears, अब स्विच गेयर की बात आ गई तो भाई टेस्टिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर भी हो जाएगा. ओके, एक्सेट्रा देयर many things that impulse voltage is used for, right? Mainly this is for testing purpose. So these are the importance of impulse voltage. So obviously you can say that the generation of impulse voltage is also essential like generation of HVDC and generation of HVAC. Okay. अभी तक जो मैंने बताया किसी को कोई समस्या है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े. जो अपन ने ये जो मेथड्स देखे थे, मेथड्स ऑफ एचवी, अपन ने अब पूरा का पूरा लाइक वी हैव डिजाइन्ड ए फॉर्मेट कि अपन को करना क्या क्या है. अभी मेथड्स ऑफ एचवी जनरेशन जो हो गया, इसमें अपन एक फॉर्मेट डिजाइन कर लिया. ये डिजाइन सक्सेसफुल फॉर्मेट और सक्सेसफुल प्लान बोल रहे हो आप. इसमें अपन को हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज डबलर सर्किट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, राइट, वेंडेग्राफ जनरेटर, कुक क्रॉप्स हो जाएगा अपना, मार्क्स इंपल्स करंट जनरेटर हो जाएगा, टेस्ला कॉइल हो गया. तो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू what we have to do, we have to look upon, or in the upcoming lectures we will discussing all the things, right? So स्टार्ट करें फिर अपन, है ना, HVDC जनरेशन से स्टार्ट कर लेते हैं. 10 मिनट है अपने पास में, तो एक तो हो जाएगा. तो हम ले लेते हैं हाई वोल्टेज DC by using
rectifier. Okay, high voltage DC by using rectifier. So there are different varieties of high voltage rectifier, half wave, full wave, voltage अपग्रेड टाइप ये हमने लिखा है. तो अब इसको इंडिविजुअली अपन लोग देखते चलते हैं. तो अभी अपना एक हाफ वेव रेक्टिफायर तो आज हो ही सकता है. बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर everybody have seen in power electronics, analog electronics. और काय में था ये हाफ वेव रेक्टिफायर, बताओ जल्दी. और किसमें था? एनालॉग ये तो मैंने ही बोला ना अभी एनालॉग. अब तुम ऐसा बोल दो सर ईडीसी वन ईडीसी. नहीं था पावर सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफरेंट तो होगा. सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड एससीआर यूज किया. हाँ अपन भी यहाँ पे भी डायोड और कैपेसिटर ही यूज करेंगे अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में. सिंपल सा है, बट ये अपन क्या जनरेशन कर रहे हैं किसका? हाई वोल्टेज डीसी का. हाई वोल्टेज डीसी का.